Good morning, everyone. Welcome back to the online class. As you can see, the topic is written verbs future time. Now we are going to learn about the future time. Already we have seen future tense. Time or tense is both the same thing. As we have already learned the two part of the tense, that was the present tense and the past tense, and now we are going to learn about the future tense. Okay, which shows the upcoming time. To talk about the future, we use verbs in two different forms. Yes, for talking about the future, what is happening in the future, we use two forms of the future tense, that is simple future and future continuous. Okay. First of all, you have to read the table to understand how we refer to the first person, second person, and third person in future time. So already we have seen this table in present tense also, in past tense also, how it refers to the persons for first, second and third person. Right. So when we are talking in future, something which is going to happen later, like aane wale time mein, then we use two forms. The future is written into two forms, that is the simple future and the future continuous form. Let's have a look over this table, which conveys, which will refer first person, second person and third person. Let's see about the simple future. So how it will be written like this: I will write, we will write, you will write, you will write, he she it will write, or they will write. So no changes we have seen, like the present tense, like it will follow आई वी यू के साथ, इट विल नॉट ऐड एस और ई एस, दे के साथ भी नहीं, एंड ही शी इट के साथ वहाँ पे एस और ई एस लगता है ना. नाउ लेट्स सी फ्यूचर कंटिन्यूअस. I'll be writing, you'll be writing, and he she it will be writing. Here also you can see no changes, only one change has been done and it continued up to the third person plural form, है ना. वो कंटिन्यू हुआ प्लूरल फॉर्म तक जो थर्ड पर्सन में. गॉट इट. सो here we'll use two forms of the future time to write about the future, like simple future and future continuous. How we are adding it, writing it, we are adding will, and for future continuous we are adding will be to the main verb. Okay. Strictly speaking, the future is not a form of the verb in itself, but is built with the help of the modal, will, and other auxiliaries. है ना? Future normally is not a form of the verb, okay? It has been written with the help of the helping verb or the auxiliary verb models. Okay, we can say them as a modal verbs, like will, shall, may, can, could, might, ought, must, this all things. Okay. Examples are the speaker pauses, present हो गया. The speaker paused, मतलब the speaker paused means रुक गया. तो past, the speaker will pause, मतलब कुछ टाइम के बाद it will pause, मतलब वो future है. Got it? So pauses where it shows about present which is continued while speaking. बोलने के टाइम में भी वो continue है, और द स्पीकर पॉज मतलब बोलने के टाइम के पहले वो ख़त्म हो चुका है. इट मे बी, इट विल बी द पास्ट, एंड द स्पीकर विल पॉज, वो बोलने के बाद कुछ टाइम के बाद इट विल पॉज, तो वो फ्यूचर है. ओके. नाउ लेट्स सी द मीनिंग. सिंपल फ्यूचर एंड विल सी द यूजेस ऑल्सो. Simple future forms. Simple future is used to talk about events that are yet to happen or will happen in the time to come. ओके. मतलब सिंपल फ्यूचर का मतलब ये है कि वो एक ऐसे टाइम के बारे में बताता है जो लाइक इवेंट टेक प्लेस करने वाला है, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद. इट इज़ अबाउट टू हैपन, इट विल हैपन लेटर. ओके. इट्स फॉर्म इज विल प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे आपने देखा विल ईट, विल प्ले, विल राइट, विल सी, है ना, ये सारे चीज़ विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. Example, I will inform. Inform is the base form,
है ना, एंड विल के साथ लगा हुआ है, देन इट कन्वेज द मीनिंग ऑफ सिंपल फ्यूचर. I will inform the students of the change in schedule. The negative is formed with will plus not, the base form of the main verb. They will not allow any disturbance. How you have to change the negative form? You have to add not. Just like in the present tense, also you have seen how you have to add not for changing the meaning of the positive sentence into negative sentence. Now it is about interrogative sentence. The interrogative is formed with will plus subject plus the base form of the main verb. मतलब जैसे आप लोगों ने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, आपके हेल्पिंग वर्ब को आगे करके सेकंड में सब्जेक्ट आते एंड देन यू हैव टू पुट द मेन वर्ब. लाइक यू विल सबमिट का हो जाएगा क्या, विल यू सबमिट, है ना. सो यू हैव टू पुट यू विल को आगे करना है और यू को जो फर्स्ट में था उसको सेकंड में कर देना है, विल यू. और सबमिट तो हेल्प मीन्स मेन वर्ब है ही, और अकॉर्डिंग टू यू यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट, योर होमवर्क टुडे. ओके, so this is the form how you have to change into negative into interrogative. Now you have to look at the uses of the simple future form. The simple future is used to talk about the followings. Okay, अब ये simple future हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? तो we talk about events that are yet to happen. जो कोई event, जो कोई time, जो कोई function जो place होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, about to take place. You have to write that, है ना. For that we are using this simple future. Very near future, है ना. Very near future means he is about to leave office, है ना. यहाँ पर will अभी will not use, वहाँ पे हम लोग क्या use करेंगे, we will use about to और main verb, है ना. will shall के जगह पे will use about to. It is also shows the future tense. Okay, फर्स्ट वाले में आई एम गोइंग टू कैंसिल द इवेंट, है ना. हेयर यू हैव टू यूज बी गोइंग टू, मतलब आई एम गोइंग, वॉज गोइंग, विल गोइंग, है ना. और ये आपका हो जाएगा क्या, सिंपल फ्यूचर, है ना. वेरी नियर फ्यूचर यू हैव टू ऐड दैट अबाउट टू. आई एम अबाउट टू लीव पटना, आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क. As I always say, I'm about to inform you something, you know, something which is going to take place in very near future. The possible outcome of an action, मतलब possible शायद, maybe, you will be, है ना. शायद के लिए भी we are using this simple future form with the will plus base form of the verb. You will slip or you will fall if you are not careful, है ना, शायद. Things that will happen as a regular phenomenon मतलब like regular जो होता है, like the children will come back from the school in hour, है ना. कुछ ऐसा चीज़ जो naturally होता है हमेशा, है ना, तो उसे बोलते हैं. For that we are using this simple future. Like I'm going means the children will come back from the school, है ना. I will go Patna in the evening. तो ये सारे क्या नेचुरल फेनोमेन और रेगुलर फेनोमेन है जो हमेशा होगा. इट्स नॉट लाइक आज हुआ कल नहीं होगा, ये रेगुलर होगा. जैसे चिल्ड्रन अगर स्कूल गए तो दे विल कम बैक ना. फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस सिंपल फ्यूचर टेंस. Now it's about future continuous form. Let's say the future continuous is used to indicate an action that will go on for some time in the future. ठीक है, वो लाइक कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में रन करेगा, एक्शन चलते रहेगा. फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. लाइक its form is will be plus the present participle of the main verb. Present participle means what? Present participle means verb के लास्ट में ing फॉर्म लगा रहना. जैसे bring तो ing लगा दो तो bringing it will become the present participle form, है ना, like that.
It was such a tragedy that people will be talking about for years. The negative is is formed with will plus not plus be, the present participle of the main verb. I will not be seeing any more patient today. You have to add will be, है ना, will be के बीच में you have to put not to form making the sentence negative one. And the interrogative is formed with will को आगे करना है, subject be the present participle of the main verb, है ना. Like you will be going to the market later in the day. There you have to, what you have to do, will को आगे करना है, you को सेकंड नंबर पर, और लास्ट में आपको be रखना है और मेन वर्ब रखना है ना. You will be, तो will you be going to the market. This will, अगर ऐसे लिखोगे तो it will just convert it into what, interrogative form. So this is the future continuous form. Now we'll see the uses of future continuous form. Why we are using this. Simple future continuous form. The future continuous is used to talk about the following, something that will happen in progress in the future, as I have told earlier also, कि कुछ action जो फ्यूचर में भी चलते रहेगा. जैसे ही विल बी रीडिंग आउट फ्रॉम हिज नॉवल एट द बुक लॉन्च, है ना, वो बुक पढ़ेगा, है ना, मे बी पढ़ेगा, उसके बाद भी बुक लॉन्च होने के बाद भी ही विल बी रीडिंग दैट. समथिंग दैट विल हैपन एज अ मैटर ऑफ रूटीन एज अ प्लान्ड हैपनिंग, है ना, कुछ ऐसा चीज़ जो रूटीन है, जो प्लान किया हुआ है और प्लान करके उस चीज़ को करना है. आई विल बी कटिंग, है ना, आई विल बी कटिंग डाउन द ट्रीज, मतलब कुछ प्लान्ड चीज़ और मे बी शायद रूटीन है और उसको फ्यूचर में करना है ना. आई विल बी एंटरिंग द टाउन इन हाफ एन आवर, आई विल बी कटिंग डाउन द ट्रीज, है ना. तो दिस कुछ ऐसा जो प्लान किया हुआ है इन फ्यूचर एंड इट इज़ अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर, और डेली रूटीन. तो here we have already learned about simple future and future continuous, why we are using them. Now we'll see some more important thing, that uses of shall and will. Why we are using this shall, why we are using this will, what they convey. Okay, shall is used with I or we, and will is used with you, she, he, it, they, है ना. shall किसके साथ यूज किया जाता है, I, we के साथ, एंड will यूज किया जाता है who, you, he. But in modern English, we are not using shall with I or we. This was used in older times, okay. In a very it is written there, archaic usage means बहुत पुराने ज़माने में we were using like I shall, we shall, है ना. But nowadays we are using I'll and will, है ना, we will and I will. So let's see about the uses of this shall and will. We first go with the using of shall. It is used in the following situations when we are using shall: to express a threat, promise, or command. And archaic usage means in older times, as I've told you that पुराने ज़माने में we were using to give a threat, किसी को डराने के लिए और बोलने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, या कमांड लाइक ऑर्डर करने के लिए we were using this shall. जैसे ही शैल बी सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन, ये थ्रेट है कि उसको सॉरी बोलना चाहिए जो वो किया है. ही शैल गेट अ रिच रिवॉर्ड फॉर होल्डिंग योर टंग, है ना, मतलब अगर प्रॉमिस रखने के लिए ही शुड हैव मीन्स ही केप्ट योर टंग. फॉर प्रॉमिसिंग ऑल्सो वी वर यूजिंग दिस शैल. यू शैल नॉट लीव विदाउट माई परमिशन, है ना, और ऑर्डर देने के लिए या कमांड करने के लिए वी वर यूजिंग द शैल. To ask a question for opinion, suggestion, or to know the listener's wish, है ना, listener's wish के लिए या suggestion देने के लिए या किसी opinion को share करने के लिए we were using this shall. Shall I help you with the luggage? Would you like me to help you? है ना, instead of that we were means ये चीज़ मीन्स करते थे, है ना, लाइक लिसनर्स के लिए, विश के लिए, है ना, और लिसनर्स के विश को जानने के लिए वी वर
using this opinion and suggestion in shall form. Which plot of land shall I buy? है ना? Which is your opinion in this matter? What is your opinion in this matter? For knowing this, we were asking this type of question. We are using this shall. Where shall we go for a holiday? Just to know कि listener का wish क्या है, we were using this shall. Okay? And now we'll go through uses of this will. Why we're using this will? It is used in the following situations to express a wish or an assurance. Okay, कोई wish को या कोई assurity को करने के लिए we were using this will. Wish को करने के लिए like I will help you, है ना, या I'll do better next time, है ना, किसी चीज़ को श्योरिटी देने के लिए we are using this word will. To express a possibility or expectations, है ना, possibility और expectation को use express करने के लिए we were using this will. Like she will not return so soon. Possibility है, expectation है कि शायद नहीं आएगी. He will call any moment now. Expectation है कि maybe he will call. Possibility है कि he will call. To offer an invitation or make a request, we are using this will. Will you have tea with me? Will you lend me your book? Request करने के लिए और invitation देने के लिए we were using this will. You got it? Why we are using will or shall? Shall तो हम लोग archaic way में use करते थे, like in modern in older time, but in modern English we are only using will. Shall बहुत कम ही use करते हैं for permission, for commanding, or we are using this shall. But in modern English, we are only dependent on this will. Okay, so it was really necessary to know the uses of shall and will, and you already learned about future continuous, simple future, and this past continuous, simple past. You already learned about present continuous, present simple present, and now here we finished the tense part, the present, the past, and the future one. Now what you have to do, you just have to learn all the definitions and the usage of these tenses, है ना. Uses अगर याद रहेगा, it will be very helpful for you to do to score good marks in exam. So guys, have a nice day to all, and bye everyone, and please read this, understand this, and memorize this all the usage. Okay, so bye everyone.